Assalamu alaikum and welcome back. I am Dr. Anil Salman and this is Management Course 563 Operation Strategy, and last time we talked about technology. And as I told you, that technology plays a very crucial role in the organization performance, in the operations management. And let's walk around with another part of this technology in terms of organization. But as the matter of routine, I have to give you the recap of the last lecture. So let's see what we did in the last lecture. We actually talked about the definition of technology, and it was basically कि आपके काफ़ी inputs होते हैं और technology क्या करती है उन inputs को transform करती है आपके desired outputs के अंदर. It's basically a technique, it's basically a process, so it's a formal or it's a hierarchical way of getting your things done. फिर हमने देखा कि टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट इवॉल्व कहाँ से हुआ था, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, व्हाट आर द लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी, हाई लेवल, लो लेवल, मीडियम लेवल, एंड देन वी डिफाइंड द डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन एंड इनोवेशन. और उसके बाद फिर हमने देखा कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन ऑपरेशंस एंड हाउ दीज ऑपरेशंस के अंदर आपकी टेक्नोलॉजी किस तरीके से आपका उसका रोल प्ले होता है, बट इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है और इन टर्म्स ऑफ आपकी सर्विसेज में इसका क्या रोल है. लेडीज एंड जेंटलमैन, today we are going to talk about technology, strategy and organizational design. When we are talking about this concept of technology, believe me, it's a huge, big discipline. And up to almiya ye hai, earlier you might have heard कि जी MBA marketing होता है, MBA finance होता था, the two big streams. But now there are universities which are offering management MBA with majors in technology management, and I know कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपका वो कोर्स है टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट का 3 क्रेडिट आवर का पढ़ा रहे हैं. बिकॉज व्हाट वी फील दैट technology has really revolutionized your organizational methods, your practices, the way you used to think, the way you used to conceive any idea. And it is because of technology कि आपकी इतनी ज़्यादा innovations हो रही हैं. If technology wasn't there, then we would have been the same kind of caveman. On the other side के technology को जब use करते हैं, there are pros and there are cons also. And when we are talking about कि जी technology को अपने इस्तेमाल कैसे करना है, we have to see कि जी आपके कौन कौन से factors हैं जो उसको influence कर सकते हैं. अब वो कौन से factors हैं? The biggest one is your time. ठीक है. The second one is your cost. The third one is your कि आपकी market की demand भी है कि नहीं. At times ये होता है that we produce a product that is completely out of the world, और जनाब उसके अंदर आपकी इतना हाई-फाई होता है that maybe people are not even ready for that, and in that cases आपका वो technology failures हो जाते हैं. Sometimes जब technology time से पहले आ जाती है, that is also one of the issues, because you have to groom people, you have to tell people that educate them कि जी इस किस्म की technology आ रही है, तब वो उसको accept करेंगे. Otherwise they would say कि okay, it's too difficult to use. It's the same case जब आपका Nokia, the biggest market leader once upon a time, and जब smartphones आए and Apple brought the revolution, so most of the people said कि we are not going to change to another smartphone. We are very much happy with our own phones. But जैसे जैसे technology आई और वैसे वैसे आपका जो change आया, and the hardware was not supposed to change. ठीक है ना, हार्डवेयर अब एक दो स्मार्टफोन्स आ गए, अब दूसरे फोन्स नहीं आते. ठीक है, जब वो ट्रेंड ही आपका चेंज हो गया तो पीपल हैड टू एक्सेप्ट इट, लेकिन उसमें भी आपकी रेजिलियंस थी. Whenever the new version of iPhone or Samsung is coming, they start educating people कि इसके अंदर ये features होंगे. It's a marketing technique, but it is also preparing people that what kind of technology is coming and how they can use it. If you ever have gone to Japan, the same kind of issue कि इतनी ज़्यादा वहाँ पे technology है that you are totally flabbergasted. You are saying कि जी wow, एक दफ़ा आपके वो जिसे कहते हैं ना मुंह से निकलेगा over there when you look at the technology at its peak. So now we see कि जी टेक्नोलॉजी के अंदर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन का अपना डिज़ाइन है वो किस तरीके से बैलेंस होता है with reference to your strategy, with reference to your technology. Now
आज the topics that we are going to discuss today in this lecture is number one, that why our strategy and organizational learning are important and linked. ठीक है, इसके दरम्यान में relationship क्या है. Then what is organizational design and how it is linked to your strategy. उसके बाद आ जाती है बात कि how does technology influence your organizational design. And then we look upon how does the environment influence the organizational design. Now talking about why is strategy and organizational learning are important and linked with each other. Now ladies and gentlemen, again going back to the same concept कि जी आपकी technology क्या है और कैसे आती है, लेकिन let's again move out to the concept of strategy. By now you might be knowing or you should know what I am expecting is कि जी आपकी strategy क्या होती है. The process of positioning the organization in the competitive environment and implementing actions to complete successfully. As I've said कि जी planning is a little bit longer, लेकिन जब हम किसी objective को achieve करना है तो this is what I am here at the present and this is what I want to be in future. अब इस gap को जो fill कर रहा है, that is basically your strategy. इस competitive environment में how do I reach at that point of time, और मैंने इसको किस तरीके से इस course of action को implement कैसे करना है, that is basically your strategy. On the other side, if we look out कि जी organizational learning होती क्या है. Organizational learning ये होती है that it is the process. Again the word process is there. Reason being कि जी it's a learning thing. It's a process of knowledge acquisition, number one, and adaptation to the changing circumstances. As I said कि जी external environment change होते रहना है, इसी तरह internal environment भी change होती है, और internal environment के लिए आपने अपने employees को क्या करना होता है, आपको different तरीक़ों से आपने उनकी organizational learning करवानी होती है. Now this is kind of कि कुछ आपकी learning organizations होती हैं. For example, Google. Always innovations are happening and it's like जो employee एक आम undergrad या एक graduate degree लेके जाता है, then his experience और जिस तरीके का वो environment आपको देते हैं, आपकी organizational learning बहुत ज़्यादा हो जाती है and you are much better what you were a year before. अब उसके अंदर ये आता है that जो नई नॉलेज आप एक्वायर कर रहे होते हैं और डिफरेंट चीज़ों के जो चेंज हो रही हैं उनके मुताबिक आप अपने आप को अडेप्ट कर रहे होते हैं, उनमें से कौन सी किस तरह हो सकती है. नंबर वन इज़ इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन, कि जैसे जैसे आपको नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, यू ऑब्जॉर्ब इट, यू शेयर इट एंड देन यू प्रोसेस इट. देन देर इज़ इंफॉर्मेशन इंटरप्रिटेशन. एक तो आपको इन्फॉर्मेशन मिली, फिर आपने उस इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट आपने कैसे किया, एंड द थर्ड वन इज़ कि वो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में रहेगी, एंड दैट इज़ बेसिकली इन्फॉर्मेशन रिटेंशन. नाउ यहीं पे एक और चीज़ आती है, दैट इज़ बेसिकली नोन एज मिमिक्री. मिमिक्री क्या होता है, इट्स बेसिकली टू कॉपी. ठीक है, कॉपिंग सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस ऑफ अदर्स. नाउ व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कॉपिंग अदर, यहीं पे मुझे एक कोटेशन याद आती है, दैट इमिटेशन कंडेम्स अ कंट्री टू अ सेकंड क्लास स्टेटस. लेकिन वहीं पे एक और बात भी आती है कि जी इफ यू कैनॉट इनोवेट, व्हाई नॉट इमिटेट. सो मिमिक्री आपको बहुत ज़्यादा नज़र आती है इन द मैनेजमेंट, इन द कॉर्पोरेट सेक्टर. आपने कोक बनाई, मैंने पेप्सी बना ली. आपने सैमसंग किया, मैंने आईफोन बना लिया. Obviously that is not mimicry, that is basically a different project, but obviously I was not in the phone business, but then I started copying the practices like yo. There are a number of organizations in Pakistan that are working on the principles just army work करती. मैंने last time आपको बताया था that I had a chance to meet the Untitled CEO, and right now the way they are screening, the way they are carrying interviews, अपनी psychological assessment करती है, and he got inspired from army. ठीक है, कि जिस तरीके से वो एक intermediate pass बच्चे को लेते हैं और उसको tests के through करके, and then he enters into Kakul and one day he turns into a general. What is the process for that? So Untitled also started the same thing. Now that is basically mimicry. Copying successful practices of others. Universities के अंदर होता है कि जी online learning concepts never did that earlier.
आई थिंक इट वाज केस वाज द फर्स्ट वन जिसने अपना ऑनलाइन मॉड्यूल स्टार्ट किया और उसके बाद पीपल स्टार्ट कॉपिंग इट. So what happens is that it provides workable solutions to problems. क्योंकि already जो problems हैं उनके solutions they're already taken out, so आपके solutions आसानी से आपको मिल जाते हैं. Then reduces the number of decisions क्योंकि पहले से वो काम हो रहे हैं, so वो जो major decisions होते हैं आपका उसमें time waste नहीं होता. And last point is basically that it establishes legitimacy and acceptance. क्योंकि it is already in established practice, तो उसके अंदर आपकी problem नहीं होती कि भी ये change क्यों आ रहा है. For example, if I say कि जी अब there is a new system in the universities. Earlier it used to be, I remember, कोई 14-15 साल पहले we would mark our attendance on the register, or that would be either in the administration block or it was used to be with the chairman of the department. But now ठीक है, इट्स अ फ्लैट एम्पावर्ड स्ट्रक्चर. तो उन्होंने क्या कर दिया कि आप कहीं पे ना जाएं, हमने मशीन्स लगा दी हमारे बिल्डिंग के बाहर, तो यू जस्ट गो देयर. सो नाउ दे आर बायोमेट्रिक्स. यू जस्ट गो एंड पॉइंट आउट योर अटेंडेंस. उसके अंदर आपका टाइम भी आ जाएगा, आपका टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग आ जाएगी एंड ऑल दैट स्टफ. सो अब ये कहाँ से हमने लिया? ये बाहर था. वर्ल्ड बैंक में आप चले जाएं, कहीं पे चले जाएं, दैट इज़ बेसिकली योर प्रैक्टिस. वो लेजिटिमेट प्रैक्टिस होती है. पीपल डोंट चैलेंज इट. सिमिलरली आपने आफ्टर these lot of terrorism, इसके बाद यहाँ पे आपका कल्चर आ गया था to you always wear your cards. I have seen my father's time, no one would carry your card, no one would carry their card कि जी अपना गले में कार्ड डाला हुआ है, but practice आ गई. अब corporate culture के अंदर देखो they always have their card with them. But कहाँ से आई? It was basically the abroad. At the World Bank over there, when I was there, तो वहाँ पे everyone have to wear a card. Without card there is no entry, and it's a legitimate thing. When we wanted to establish the same thing in Pakistan, तो यहाँ पे जो example दी जाती है वो यही कहा जाता है कि जी outside, abroad, people are doing it, so what is the problem that why can't people go for the biometric, why can't people wear their cards or service cards all the time? So therefore these things, ये जो मिमिक्री होती है ये तो आपकी कॉस्ट्स कम कर देती है, डिसीजंस को कम कर देती है, आपकी लेजिटिमेसी इंक्रीज कर देती है, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव सम प्रेसिडेंट्स दैट हेल्प्स यू. नाउ जब हमने ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा, वहीं पे हम बात करते हैं आपका एक्सपीरियंस क्या होता है. एक्सपीरियंस इज बेसिकली अ प्राइमरी वे टू एक्वायर नॉलेज. यहाँ पे यू आर नॉट रीडिंग बट यू आर एक्चुअली इंटरैक्टिंग विद द एनवायरनमेंट एंड फ्रॉम देयर यू आर लर्निंग द थिंग्स. Besides learning by doing, managers can also establish structure programs to learn from successes as well as failures. There are a number of organizations जो कि अपनी डॉक्यूमेंट करती हैं कि क्या क्या उनकी सक्सेसेस हैं, क्या क्या उनकी फेलियर्स हैं, फिर they actually try to replicate their successes or failures को they do not repeat it and they try to find out कि क्या problem हुई है उसके अंदर. ठीक है, so इस तरह ये this is basically your experience, learning by doing. It's an action oriented learning. Now comes another कि दो आपकी चीज़ें होती हैं. One is your scanning and another one is your grafting. Scanning क्या होता है? It involves looking outside the firm and bringing useful solutions. यानी you are not trying to, अगर कोई organization के अंदर कोई problem आती है, कोई issue आता है, so now you're looking outside the organization. आप scan कर रहे हैं, you're looking beyond your organizational boundaries and you're looking for solutions. I will again repeat it, it involves looking outside the firm and bringing back useful solutions. So आप बाहर की companies को देखते हो, बाहर के examples देखते हैं, and then you try to bring back in Pakistan or in your organization. दूसरा क्या होता है कॉन्सेप्ट आपका है ग्राफ्टिंग का. ग्राफ्टिंग में क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग इंडिविजुअल्स यूनिट्स ऑफ फर्म टू ब्रिंग इन यूजफुल नॉलेज. अब यहाँ पे आप क्या कर देते हो? आप इंडिविजुअल्स को लेके आ रहे होते हो, आप फर्म्स को लेके आ रहे होते हो, एंड यू आर एक्चुअली ब्रिंगिंग इन द यूजफुल नॉलेज. देन कम्स What are the avenues of knowledge retention? जब हम बात करते हैं कि जी information आप retain कैसे कर सकते हैं, that was the third point. Now information retention के लिए सबसे पहले आपके होते हैं आपके individuals. ठीक है, like I always forget that okay I have to scan my card, but my friend always with me standing always reminds me कि जी आपने यार ये कार्ड आपने स्कैन कर लिया था, have you done that, have you done that?
So that's one way individuals do that. Then transformation mechanisms. There are different programs, there are different mechanisms by which people try to retain the new knowledge. Then there are formal structures. आपके learning material होते हैं, आपकी books वगैरह होती हैं by which you retain them or formal learning के through. उसके बाद फिर आपके physical structures होते हैं. For example, if physical structure में मैं learning ऐसी कर देता हूँ कि जी अगर आपने दरवाजे से enter होना पहले there was no biometric, अब आ गया, लेकिन जब तक आप बायोमेट्रिक नहीं करेंगे दरवाज़ा नहीं खुलेगा. अब ऑटोमेटिकली मैंने फिजिकल स्ट्रक्चर के अंदर कैसी लर्निंग रखी हुई दैट यू हैव टू प्रेस द बटन देन यू कैन कम आउट, देन यू कैन कम इनसाइड. देन देयर आर ऑलवेज एक्सटर्नल आर्काइव्स एंड देयर आर आईटी सिस्टम्स जो कि आपके क्या कर होते हैं, नॉलेज को रिटेंशन करते हैं, जिनको रखते हैं. ठीक है. देन आपका organizational design. What is organizational design? It's basically the process of choosing and implementing a structural configuration. कि आपके organization का design कैसा होना चाहिए. You might have heard about the जो management का जब हमने course पढ़ा था उसके अंदर हम 3 hierarchies पढ़े थे, top management, middle management and the first line managers. तो ये 3 थे. इसी तरह अब आपका organization का design कैसा. Are you working on the flat structure? Are you working on the tall structure? What kind of like design you really want to have in your organization. Then comes अब जो हम 4 चीज़ें हम we try to consider when we are talking about our organizational design. Number 1 is your size, कि कितना बड़ा हो या कितना छोटा हो. What is the size of your organization? Then आपके ऑपरेशंस कैसे हो रहे हैं और उसके अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैसी है. उसके बाद आपकी इन्वायरमेंट कैसी है ऑर्गेनाइजेशन की. उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी यू आर इम्प्लीमेंटिंग. सो दैट ऑल कम्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन के डिज़ाइन के अंदर ये चीज़ें आती हैं. अब आ जाती है व्हाट इज बेसिकली योर स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन. स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन क्या करता है? इट अलाउज द मैनेजमेंट टू फोकस ऑन स्किल्स एंड एबिलिटीज दैट देयर फर्म्स नीड टू कम्पीट, बी फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टिव. ठीक है. अब हम क्या कर रहे हैं, वी आर एक्चुअली जैसे कहते हैं ना, कन्वर्टिंग वुड बी अ रॉन्ग वर्ड. वी आर एक्चुअली making our individuals at par with the global challenges. We are making our individuals at par with the real problems जो आनी है, तो हम उनके लिए उनको तैयार कर रहे होते हैं. For example, if you get a job at Slum या मॉल के अंदर आप चले जाते हैं, या प्रॉक्टर एंड गैम्बल के अंदर, अगर एनजीओज में आप देखते हैं, तो अगर आप यूएन में चले जाएं या WWF पाकिस्तान WWF में जाएं, so what they do is that they have a full-fledged orientation या आपके learning programs होते हैं which prepare you कि भी मैंने किस तरीके से इन ऑर्गेनाइजेशन चैलेंजेस को मैंने हैंडल करना है. अब ये जो स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन है ये वही है कि जी आपको हम किस तरीके से एक आइडियल पर्सन बनाते हैं, फिर हम उसको आपको ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग के अंदर हम फिट करते हैं. इट अलाउज द इंडिविजुअल मेंबर्स द एबिलिटी टू एक्सपेरिमेंट, ग्रो, डेवलप कॉम्पिटेंसीज एंड कंट्रीब्यूट टू सक्सेस. अब वो आपका यू आर ट्रांसफॉर्मिंग वुड बी अ राइट वर्ड. ट्रांसफॉर्म आप हो रहे होते हैं गिवन के जैसे जैसे, क्योंकि वंस आई एम इन द एकेडेमिया or once I'm getting my degree, most of you who are doing jobs, you would agree with me कि जो हम चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, जो हम यूनिवर्सिटीज से हम नॉलेज लेके आते हैं, once you are in these big corporations, in the multinationals, they don't really exist. There may be an ideal situation, लेकिन बाद में हमारी experiential learning से हम उन concepts को apply करते हैं और एक नई फॉर्म में कार्य होती है. ठीक है ना. ब्रेनस्टॉर्मिंग आप अगर आपने करवाई हो या फोकस ग्रुप डिस्कशन करवाए हो, वो लगता है बड़ा हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड एवरीथिंग, लेकिन इट्स द वे यू आर कंडक्टिंग इट. ठीक है. अब मैंने पढ़ा तो है थ्योरी में, लेकिन वंस आई एम डूइंग इट प्रैक्टिकली इट मे बी डिफरेंट. ठीक है. सो मोटिवेशन हम कहते तो हैं, लेकिन मोटिवेट करने के कई तरीके होते हैं. सम माइट बी यूजिंग कोर्सिव पावर, सम माइट बी यूजिंग दिस. सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन है, दैट गिव्स एन इंडिविजुअल दैट स्पेस कि जहाँ पे वो क्या कर सकता है, अपने चीज़ों, अपनी एबिलिटी को एक्सपेरिमेंट कर सके, अपने आप को ग्रो कर सके एंड अपनी कॉम्पिटेंसीज को ग्रो वो करे, स्ट्रॉन्ग करे. बिकॉज वंस वी आर हेयर इन द ऑर्गेनाइजेशन, आपने ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अपने आप को ढालना होता है. देन कम्स योर को एवोल्यूशन ऑफ स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रक्चर. किस तरीके से दोनों को एवोल्यूट करते हैं. द फर्म कैन एडजस्ट टू
external changes even as it shapes some of the challenges it's facing it. Very true. And shaping capabilities via organizational design is a dynamic aspect of co-evolution. Now, these two things are happening at the same time. अब हमने बात की थी organizational size की. As the number of employees increase, the possible interconnections among increase more. जैसे जैसे आपके employees increase करेंगे वैसे वैसे उनके आपस में वो conversation, उनके आपस में interactions वो increase होंगी. The design of a small firm is directly influenced by core operations technology. अब जैसे जैसे आपकी फर्म का साइज अगर छोटा है तो उसके अंदर आपका रोल क्या है, आपकी टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा. देन कम्स द सिंपल डिज़ाइन. अब सिंपल डिज़ाइन क्या है, ये हम स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन में डिज़ाइन में पढ़ रहे हैं. अ कॉन्फ़िगरेशन इन्वॉल्विंग वन और टू वे ऑफ स्पेशलाइजिंग इंडिविजुअल्स एंड यूनिट्स. ठीक है, दैट इज़ बेसिकली योर सिंपल डिज़ाइन. अब इसमें आप क्या कर सकते हो, वर्टिकल स्पेशलाइजेशन एंड कंट्रोल. Vertical specialization and control emphasize levels of supervision without elaborate formal mechanisms. कि जी आपको वहाँ पे आपको formal इस तरीके का mechanism define करते हैं, but basically what you are looking into कि जी आपकी जो vertical specialization है वो आपकी proper supervision हो वहाँ पे. Then comes your managerial scripts. Managerial scripts क्या होता है? It is series of well-known routine for problem identification and alternative generation and analysis that are common to managers in a firm. तो वो क्या होता है? आपके managerial scripts होते हैं. Then comes your barriers to desired action. That what kind of barrier आप कहते हैं जी मैंने इस particular strategy को apply करना, लेकिन what are the barriers why you are unable to implement it. Number one barrier क्या होता है, over emphasis on vertical relations, कि बहुत ज़्यादा strong आपकी vertical relations है. अब इसके अंदर क्या होता है कि it will not help you in terms of your implementation of an action. हॉरिजॉन्टल फ्लैट स्ट्रक्चर जितना होगा उतना ज़्यादा बेहतर होता है, एम्पावर्ड जितने होगा, लेकिन जितना टॉल स्ट्रक्चर होगा, ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा होगी, वर्टिकल एम्फेसिस ज़्यादा होगा, तो देन यू माइट हैव अ प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग योर डिसीजंस. देन सेकंड क्या आ जाता है, आइसोलेटिंग ऑफ फर्म फ्रॉम इट्स पार्टनर्स. अगर फर्म्स क्या करें, अपने आप को आइसोलेट कर लें, बिकॉज इन आइसोलेशन व्हाट यू डू इज़ यू आर जस्ट थिंकिंग मोनोटोनिकली. आप एक बस लीनियर थिंकिंग कर रहे होते हैं एंड यू डू नॉट गेट वो जिसे कहते हैं ब्रेनस्टॉर्म नहीं करते, आपके आइडियाज़ उस तरीके से जनरेट नहीं होते. देन ओवर एम्फेसिस ऑन फंक्शंस और प्रोडक्ट लाइंस, कि आप ज़्यादा प्रोडक्ट लाइंस पे एम्फेसिस कर रहे होते हैं या उसके फंक्शंस पे एम्फेसिस कर रहे होते हैं. और फोर्थ आपका क्या आ जाता है, आपकी जियोग्राफिक लिमिटेशंस हैं, आपकी नेशनलिटी का, आपका कल्चरल आ जाता है. तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एज दे टेंड टू बी अ बैरियर इन टर्म्स ऑफ योर डिज़ायर्ड एक्शन. उसके बाद अब आ जाता है कोएवोल्यूशन ऑफ वो जो हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रक्चर कैन बी हैपेंड. किस वजह से हो सकता है? नंबर वन ऑर्गेनाइजेशनल इनर्शिया की वजह से, नंबर टू ह्यूब्रिस की वजह से, नंबर थ्री इशू ऑफ डिटैचमेंट की वजह से. देन कम्स योर हाउ डज टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन. अब सबसे पहले आ जाता है ऑपरेशंस टेक्नोलॉजी. Operations technology क्या होता है? It is the combination of resources, it's the combination of knowledge, it's the combination of techniques that creates product or service. अब इन resources, knowledge और techniques जो है कि नया product बनाए, that is basically your operational strategy, operation strategy. Then comes your information technology. IT क्या है? It is the combination of machines, artifacts, procedures and systems used together store, analyze and disseminate information for translating into knowledge. Yani information technology is actually processing all the data into useful information what you actually need. उसके बाद अब टेक्नोलॉजी के दो व्यूज़ हैं. एक बड़ा फेमस व्यू है, दैट इज़ बेसिकली योर थॉमसन्स व्यू. थॉमसन व्यू क्या कहता है? दैट इज़ बेसिकली क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ स्पेसिफिकेशन and degree of interdependence of work units. कि आप क्लासिफिकेशन किस तरीके से करते हैं on the degree of specification and the degree of interdependence of work units. ठीक है, so that is basically your Thomson's view about technology. अब
इसमें क्या आपका एक और टर्म यूज़ होती है, दैट इज़ बेसिकली इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। इंटेंसिव टेक्नोलॉजी क्या होती है? अनसर्टेनिटी एज टू हाउ प्रोड्यूस डिजायर्ड आउटकम्स एंड इट रिक्वायर्स assistance of specialists, because that is more of a technical thing, that is more of intensive, that is more of hardcore, that is more of deep down आपने उसको देखना होता है, तो इसके लिए आपको स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है। दूसरी क्या होती है? मीडिएटिंग टेक्नोलॉजी। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, इट लिंक्स पार्टीज दैट वांट टू बिकम इंटरडिपेंडेंट। उसके बाद एक होती है लॉन्ग लिंक्ड टेक्नोलॉजी। लॉन्ग लिंक्ड टेक्नोलॉजी क्या होती है? इट्स अ प्रोडक्शन मेथड इज नोन एंड ब्रोकन डाउन इनटू नंबर ऑफ सीक्वेंशियल स्टेप्स, दैट इज बेसिकली लॉन्ग लिंक्ड टेक्नोलॉजी। उसके बाद आपका आ जाता है सेकंड व्यू, आपका आता है अपार्ट फ्रॉम थॉमसन्स व्यू, दूसरा आ जाता है आपका वुडवर्ड्स का व्यू। वुडवर्ड का व्यू क्या है? इट्स बेसिकली कि यू गो फॉर द स्मॉल बैच प्रोडक्शन, यू डोंट गो फॉर द लॉन्ग एंड द बिग वंस, यू गो फॉर द स्मॉल बैच प्रोडक्शन। आप मास प्रोडक्शन करते हैं और कंटिन्यूस प्रोसेस टेक्नोलॉजी आप यूज़ करते हैं। दैट इज़ बेसिकली योर वुडवर्ड्स व्यू ऑफ टेक्नोलॉजी। नाउ एडहॉक्रेसी क्या होती है? एडहॉक्रेसी इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय फ्यू रूल्स। आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन के अंदर देखते हैं आपके फ्यू रूल्स हों, आपके पॉलिसीज़ भी कम हो और आपके प्रोसीजर्स भी कम हो। उसके बाद सबसे ज़्यादा आपने डिसेंट्रलाइजेशन की हो, यानी एवरीवन इज़ एम्पावर्ड। उसके बाद शेयर डिसीजन मेकिंग अमंग मेंबर्स, यानी आपके जो डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म है उसमें क्या होनी चाहिए? शेयरिंग होनी चाहिए। देन कम्स एक्सट्रीम हॉरिजॉन्टल स्पेशलाइजेशन। पीछे हम वर्टिकल की बात कर रहे थे एंड दैट वाज वन ऑफ द हर्डल्स इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग योर स्ट्रैटेजी। यहाँ पे हम बात करते हैं एक्सट्रीम हॉरिजॉन्टल स्पेशलाइजेशन। उसके बाद आपके लेवल ऑफ मैनेजमेंट कम हो और वर्चुअली नो फॉर्मल कंट्रोल्स। नाउ दिस सीम्स टू बी अ वेरी गुड स्ट्रक्चर। अब इस वक्त जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, इस वक्त जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो मोस्टली इसी किस्म का स्ट्रक्चर यूज़ कर रही हैं, जहाँ पे ज़्यादा आपकी क्या है इनफॉर्मेलिटी है, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा आपके लोगों के क्या है स्ट्रक्चर्स फ्लैट हैं। पीपल आर टेक्नोलॉजिकली एम्पावर्ड, ठीक है, दे कैन मेक डिसीजंस ऑन देयर ओन। रूल्स आप जितने ज़्यादा बनाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी टाइम और कॉस्ट इंक्रीज होगा। तो इस वजह से फ्यू रूल्स, लेकिन मेक श्योर दैट दोज रूल्स नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड, द रूल्स नीड टू बी अप्लाइड। उसके बाद आपकी जो सब्सटैंशियल डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। अब डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर डिफरेंट लेवल्स हैं। फॉर एग्जांपल कितनी पावर ट्रांसफ़र ऑफ पावर आपको दी जा रही है। अब वर्ड उसने यूज़ किया एडहॉक्रेसी के अंदर सब्सटैंशियल दी जाए, यानी यूनिट्स आर इंडिपेंडेंट। एक प्रॉब्लम ये होती है कि जितना आप उसको सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर बनाते हैं, येस इट गिव रिजल्ट्स। आई विल गिव यू द एग्जांपल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। It's not decentralized, it's a highly centralized. They follow a very strict hierarchy, but see how the results what kind of results they give. But you don't expect creativity over there, you don't expect innovation over there. Creativity and innovation only comes when you are actually giving people space to think. But if you are just telling them कि जी ये rules हैं, ये आपने उनको follow करना है, और अगर rules को follow ना किया फिर penalty पड़ेगी, then creativity नहीं होगी. So why organizations moved, वो जो वेबर ने एक थेरी दी थी ब्यूरोक्रेसी के, जी आप टॉल स्ट्रक्चर्स रखते हैं, आप you just work on the organizational structures. So what वेबर के बाद जब डिफरेंट आया, टेलरिज्म आया, उसके बाद डर्कर आया एंड ऑल दीज पीपल, जो आजकल हम देखते हैं which has been there for the past so many years, that is basically that we are moving towards the flexible structures, we are moving towards the flat structures, क्योंकि that actually helps you. But has it happened all of a sudden? No, it's not happened. The reason is कि क्यों ये हो गया, क्योंकि अभी it is a misconception that if you feel कि जी आपको empower किया जा रहा है, you are not being empowered. That's my view. You may differ from each other, but आपको control अभी भी किया जाता है, बट कंट्रोल उस तरीके से किया जाता है कि दैट यू फील दैट ओके आई कैन मेक डिसीजंस, बट यू आर स्टिल अकाउंटेबल, ठीक है, यू आर स्टिल कंट्रोल्ड बाय टेक्नोलॉजी। दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू कि जी अब आप कहीं पे चले जाएं, यस आई हैव से कि जी कोई टाइम का नहीं है, लेकिन बायोमेट्रिक लगाते हैं, लॉग इन आ जाता है, लॉग आउट आ जाता है, ठीक है, you are moving from one place to another, I can easily track you
GPS से कर सकते हैं। यहाँ आपके फ़ोन्स के अंदर अब तो लोकेशन आईडीज़ होते हैं कि कहाँ पे इस वक्त आप बैठे हुए हैं। आर यू फ्री? वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ आवर ओन टेक्नोलॉजी, राइट? वी फील कि जी हम कहीं पे भी जा सकते हैं, बट इट्स नॉट ट्रू, ठीक है? वर्चुअली देयर आर नो फॉर्मल कंट्रोल्स, जैसा वो स्लाइड्स के लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, बट देयर आर ऑल कंट्रोल्ड. You can be tracked anywhere. अब तो there are certain organizations which actually put a chip in it, and आपका जो कार्ड होता है उसके अंदर आपकी चिप लगी होती है, and they can track you, they can block your numbers, they can block your financial accounts and everything. Aren't you controlled or are you empowered? So वो बात करना कि फ्लैट स्ट्रक्चर हो गया, इट्स वेरी गुड. एफिशिएंसी हो गई, यस. पीएनस रिप्लेस हो गए, यस. लेकिन अब पीएन की जगह क्या हो गया? मेरे पास कॉफ़ी मशीन है. पहले वो कॉफ़ी बनाया करता था, अब मुझे बनाने की जरूरत नहीं, अब मशीन बनाती है ना. सो दैट पीएन हैज रिप्लेस्ड बाय मशीन. अर्लियर अब अगर आप देखें तो वो जो रोल्स थे जो हमें लगते थे बहुत हाईली ब्यूरोक्रेटिक हैं या बहुत हाईली फॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं, I still feel that they are still there. But the only issue that we don't understand is कि उनका जो form है वो change हो गई है. Now it's technology. Technology controls you. Have you ever realized कि जी अगर आपका phone आपसे मैं 10 मिनट के लिए ले लूँ, the first thing you'll start doing is, oh, where's my phone? Aren't we वो जिसे कहते हैं slave of that technology? Then we would say कि yes, we are connected इस वजह से, and it's such a cheaper way. But just tell me where the real relationships are gone. Now when we go to have go for an eat out, what we usually do is the first thing before the waiter is offering you water or anything, the first thing you would say, what is the password for Wi-Fi? I saw a very interesting advertisement, and that was basically do not ask for your Wi-Fi over here and switch off your cell because you are here for a cup of coffee, you are not here for chatting or anything like that. So adhocracy is good, technology is very good, लेकिन आप technology को एक level तक अगर हम use करेंगे तभी वो बेहतर है. Everything just focused on technology can actually affect your operations, ठीक है ना. In a sense वो इस वजह से affect कर सकते हैं कि जो आपकी efficiency है वो आपकी improve तो होगी, लेकिन आपकी dependency उस पर completely बढ़ जाएगी. Electricity is one of the technologies. Refrigerator is there, television is there, internet is there, computer is there, phone is there. These are all technologies. Now if you just say if you just stop using one of them, you will feel how much your life is empty. Try an experiment for 24 hours, just stop your phone, and then you will see how you feel like. Okay? So, I agree with Thompson's view, I agree with Woodward's view, and I say that technology आपको empower करती है, लेकिन मेरा counter view ये है कि technology आपको further enslave कर लेती है. अब कि हम उसमें इतना engross हो जाते हैं that we just forget about the real world. We just forget about that there are other people also. We just feel that I can use technology and I can stay with it forever. But that technology is going to change. We can't just stay with that forever. It has to change, and it will be changing. And if you see, there are certain class of people who have started saying, let's not use the technology. And this is like happening in this 2015. I have seen some younger generation who do not use cell phones, who just still use conventional phones, and they have a very limited use of technology. And why is that? Because they feel that technology is actually enslaving you. Okay? There might be, or maybe you might be one of them who are spending like 24 hours on the Facebook, but you have never seen your friends who are just living next door, because technology ne itna hame kar diya hai that we actually can live with it.
Similarly, in Japan now they are having serious birth issues because people are not interested in terms of marrying, in terms of spending life together. They say, well, the virtual world helps us doing everything. So अब वो technology इतनी आ चुकी है that we don't even need humans to support us. We don't feel alone because once we are on the net, chatting शुरू कर दी, Skype शुरू कर दी, webcamming शुरू कर दी and everything, and we feel that we are complete. So it's good, but let's not have it to a limit where we are actually become slave or where we actually become too much dependent upon technology. Now, when as such decentralization, when such adhocracy is useful? It's basically useful when the tasks facing the firm vary considerably and provide many exceptions. ये वहीं पे चल सकता है जहाँ पे आपका creativity का काम है, जहाँ पे आपका routine का काम है, फिर तो वही rule चलेंगे. Then problems are difficult to define and solve. आप कहाँ पे adhocracy use करते हैं? Where problems are difficult to define and solve. जब ऐसी situation हो, then we actually go for such initiatives. अब आ जाता है why IT makes the difference. अब अगर हम information technology को लेके आए, how does it make the difference in the organization? Number one, it provides a partial substitute for operations. ठीक है, जहाँ पे लोगों ने काम करना है वहाँ पे टेक्नोलॉजी आपको हेल्प आउट कर रही होती है. देन इट इज़ अ सब्स्टिट्यूट फॉर योर प्रोसेस कंट्रोल्स, जो आपने हर प्रोसेस के अंदर कंट्रोल्स लिया. उसके बाद देन इट एक्चुअली सब्स्टिट्यूट फॉर द मेथड्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. सो आईटी आपको क्या कर देता है? आईटी एक्चुअली गिव्स यू स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी, हाउ टू पोजिशन योरसेल्फ. जितनी अच्छी फर्म है, जितना ज़्यादा उसमें ये टेक्नोलॉजी के वो आ रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा वो बेहतर ऑपरेट करती है. आईटी एज अ सब्स्टिट्यूट, अभी उसने पीछे वर्ड यूज़ किया था. इनिशियल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईटी ऑफन डिस्प्लेस्ड रूटीन, highly specified and repetitious jobs. Then a second wave of substitution replaced process controls and informal coordination mechanisms with IT. So दो stages में होता है. पहले में implementation of IT often displaced routine, highly specified and repetition वाली जो repeat jobs होते हैं उसमें आप करते हैं. Second आता है कि आप अपने process controls के अंदर use करते हैं. Then IT के पास क्या है? Information technology has a strategic capability. अब कौन सी वो capability है? It improves the efficiency, speed of responsiveness and effectiveness of operation. यानी आपकी efficiency आ गई, आपकी speed of responsiveness आ गई और आपकी effectiveness of operations आ गया. Then provides all levels of organization with the knowledge required for immediate decision making. It gives you all kinds of organization. जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है उनको क्या करता है? नॉलेज प्रोवाइड करता है सो दैट दे कैन मेक डिसीजन. अगर आईटी ना हो, जस्ट इन वन क्लिक आई कांट हैव ऑल द ईमेल्स. अगर आईटी मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा, आई कांट ब्राउज फॉर थिंग्स. अगर आईटी से फोन नेटवर्क नहीं चल रहा तो आई कैन नॉट connect with other people. So information technology actually is the biggest source of connecting and getting knowledge. Enhances motivation through individual empowerment. यानी आपका वो क्या करता है? आपकी मोटिवेशन इंक्रीज हो जाती है जिस तरीके से आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है. ठीक है ना? I'll give you a very small example. शुरू में होता था that we would require these signatures on the checks. ठीक है? अब जब हम चेक्स को साइन करते थे एंड ऑल दैट स्टफ, सो आपका जो मैनुअल खाते निकले करते थे, देन द साइंस वुड बी वेरीफाइड एंड देन द सेम टोकन person sitting next to him will again call another person, the check will be given to him, and it was a long process. अब आप क्या करते हैं? Now there are electronic signatures. अगर आपने कैश ज़्यादा निकालना है तो you just go to the bank and it can give you the cash. ठीक है? How is it possible कि वो जो इन्फॉर्मेशन है सारी जो कि शुरू में उसको खातों से खोलनी पड़ती थी और आप जिस ब्रांच में आपका बैंक अकाउंट होता था आप उसी ब्रांच में जा सकते थे. Now what they have done is they have actually changed the whole scenario. The information has actually, IT has actually improved in terms of empowerment of decision making. Now you can go anywhere and your data is available anytime. ठीक है? So it provides that. So
इन्फॉर्मेशन आईटी किस किस को अफेक्ट कर रही होती है? आपकी स्ट्रैटेजी को अफेक्ट करती है, आपके ऑपरेशंस को अफेक्ट करती है, आपकी मैनेजमेंट को अफेक्ट करती है और आपके स्ट्रक्चर को अफेक्ट करती है. दैट व्हाट वी हैव सीन इन आवर डेली लाइव्स कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी ने ये सारे रोल्स प्ले किए हैं. देन कम्स टेक्नोलॉजी एंड ई बिजनेस. बहुत सारी .com फर्म्स आई, ठीक है, एंड दे अडॉप्टेड वेरिएशन ऑफ हिपोक्रेसी. माइक्रोसॉफ्ट को ले लें, गूगल को ले लें, फेसबुक को ले लें, उसके बाद आपका और बड़ा जाइंट कौन सा है, एडोब को ले लें, ऑरेकल को ले लें. जितनी भी बड़ी फर्म्स आई उन सारों ने अपनी लेवल की हिपोक्रेसी की. नाउ देयर आर आईटी कंपनीज, आई थिंक आई टोल्ड इन योर कोर्स कि नाउ इट्स विदाउट सुपरविजन. ठीक है, अब सुपरविजन होती नहीं है एंड नाउ एम्प्लॉयज़ गेट वरीड. अब एम्प्लॉयज़ को एक्चुअली डिफरेंट ट्रेनिंग दी जा रही है इन अ सेंस कि जी वाई देयर इज़ नो वन आस्किंग मी, बिकॉज the South Asian workforce है, even in US, if no one asks you कि भी आज आपने क्या किया, कैसे किया, क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, कब करोगे, इसके अंदर क्वेश्चन ना पूछना, तो we don't feel something कि जी हम कुछ कर रहे हैं, we don't feel good about it. लेकिन अब क्या, अब IT से क्या होता जा रहा है, that I can have all my staff from USA and I can have my work done in USA without any problem because of information technology. So ये जो है कि आप कितना उस स्ट्रक्चर को फ्लैट रखते हो, दैट इज़ इन योर कंट्रोल कि आपने उस स्ट्रक्चर को कहाँ तक लेके जाना है. देन कम्स मोस्ट .com grew, the advocacy design became problem. लेकिन जैसे जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो करती हैं, इट्स नॉट अबाउट 100,000 ऑफ एम्प्लॉयज़ होते हैं, फिर वहाँ पे एडवोकेसी क्या करती है, प्रॉब्लम्स कर रही थी, बिकॉज हर कोई अपने अपने डिसीजन करता है, हर कोई एम्पावर्ड होता है क्योंकि आपने उसको यही कल्चर में लर्निंग करवाई है. एंड दैट्स वाई क्या लगती है, आपकी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. फिर एक कॉन्सेप्ट मैंने पीछे पढ़ा था सप्लाई चेन के अंदर, दैट इज योर वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन. वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, an ever-shifting constellation of firms with the lead corporation that pool skills, resources and experiences to thrive jointly. Partner firms are bound by mutual trust and need for collective survival. That is basically your virtual organization. अब लास्ट में 2-3 slides हैं, that is basically your environment. अब ये जब हमने environment की बात की, and we were earlier talking in the previous lectures कि आपकी environment 2 किस्म की है. One is your external environment and another one is your internal environment. External environment में आपका आ जाता है pest, political, economic, social and technological. जो internal environment होती है उसके अंदर आपके employees आ जाते हैं, आपके customers आ जाते हैं, आपके stakeholders सारे आ जाते हैं, and how they are actually affecting your organization. अब जनरल एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो वो क्या होती है, दीज आर बेसिकली सेट ऑफ कल्चरल, इकोनॉमिक, लीगल, पॉलिटिकल एंड एजुकेशनल कंडीशंस फाउंड इन द एरियाज इन विच ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट. उसके अंदर आप ये ऑपरेशंस करते हैं. देन स्पेसिफिक एनवायरनमेंट क्या होती है, दैट इज बेसिकली योर जनरल एनवायरनमेंट. स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में क्या होती है, द ओनर्स, योर सप्लायर्स, योर डिस्ट्रीब्यूटर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड कंपेटिटर्स with which an organization must interact or grow and survive. That is basically a specific environment. अब क्या हो जाता है कि जी environmental complexity किस तरीके से बढ़ती है, when there is interdependency, when there is uncertainty, when there is richness. जिस तरीके से ये सारे interact ज़्यादा कर रहे होते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं, environment को ज़्यादा complex कर रही होती हैं. उसके बाद आपका आ जाता है environmental richness. Now what exactly is environmental richness? It's basically it's a condition where economic climate is improving, customers are buying more products and suppliers are willing to invest in the organization's future. Now that is something जो कि हम करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके ये वाले जो पैरामीटर्स हैं हम इनको ज़रूर डिस्कस करते हैं कि आइदर ऑर्गेनाइजेशन इज़ रिच और नॉट. व्हेन वी टॉक अबाउट इट्स रिचनेस वी आर लुकिंग कि जी हमारे प्रोडक्ट को किस तरीके से लोग देख रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट को किस तरीके से लोग ले रहे हैं. देन वी आर टॉकिंग अबाउट
कि जी आपकी ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हो रही हैं, इम्प्रूव हो रही हैं। उसके बाद जो सप्लायर्स हैं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से खुश हैं, दे वांट टू इन्वेस्ट इन योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देन इट प्रोवाइड्स द बेस्ट क्लाइमेट फॉर अपॉर्चुनिटी एंड डायनामिक ग्रोथ, एंड दिस इज़ व्हाट दे से कि जी अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन रिच है, and this is the best time when people would like to invest in your organization because they have confidence about the performance of your organization. So you have your people, you have your employees, you have the technology, you have the required hardware. Hardware means you have the required infrastructure, how to implement it. So once you have all of it and they are all conducive, then we say कि जी आपकी environment में क्या है, बहुत ज़्यादा richness है, there is environmental richness in the organization. Number of times ये होता है कि आपकी technology बहुत sophisticated होती है, but the problem is कि आपको human labor ही वैसा नहीं मिलता. I have seen a number of places in Lahore or in Karachi and even though in Islamabad जहाँ पे structures बने हुए हैं, ठीक है, लेकिन उनको चलाने के लिए कोई नहीं है, बिकॉज हमने लोगों की वो जिसे कहते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की, ठीक है। इफ़ पीपल आर ट्रेन्ड दैट व्हाट काइंड ऑफ न्यू ट्रेंड्स आर कमिंग, व्हाट काइंड ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इज कमिंग, देन ऑब्वियसली आपका आउटपुट इंक्रीज होगा। बट इफ़ पीपल आर अनअवेयर, सो जो बात सारी जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि इट बॉयल्स डाउन टू पीपल, इट बॉयल्स डाउन टू इंडिविजुअल्स कि जी आपके जो लोग हैं वो किस तरीके से इसके अंदर बिहेव करेंगे। Whether you have created an environment where they would like to discuss ideas, or you have created an environment where they don't want to discuss the ideas. Whether you have created a situation where people like to use the technology, or you have created a situation जहाँ पे लोग technology use करते हैं उसके बाद फिर reluctant होते हैं कि जी whether I should use it or not. So it is a very close relationship between your technology, between your operation strategy, and between the people. So how people are actually going to use this technology, how people are going to utilize it, how people are going to use कर लिया उसके बाद उन्हें utilize कर लिया, how people are going to benefit out of it, that is the real question. Do they cooperate or do they have diverging paths? So technology जहाँ पे रोल प्ले करती है in terms of prospering the business, वहाँ पे technology negative भी रोल प्ले कर सकती है if people are not comfortable with that particular technology. I'll give you an example कि हम GIS data बहुत यूज़ करते हैं, उसके बाद फिर एक और अभी नई टेक्नोलॉजी आई, that is basically your MatterNet. इंटरनेट के बाद अब नई चीज़ है क्या आ गई है, that is MatterNet. And what we are doing in MatterNet is that we are using the drone technologies. Basically हम zeros और इंटरनेट क्या है, it's basically zeros and ones. मैं यहाँ से ईमेल करता हूँ कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज उसको भेज के किसी और जगह वो मेल चली जाती है उसी टाइम पे and the person can read it. But how that mail has gone, that is basically by zeros and ones. So internet is just the Boolean algebra. But अगर आप ये कहें कि जी I want to have a burger at the moment, अब the easy way is that you call the KFC, McDonald's, whatever, and the person will come like in 30-40 minutes and he will deliver that to you. लेकिन अगर मैं ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी में ये मैं मैटरनेट को यूज़ करूँ, अब मैं क्या करूँगा कि जी आई गिव देम द ऑर्डर एंड ऑटोमेटिकली एक ड्रोन ऊपर से आता है और ड्रोन आपको आपका डिज़ायर्ड खाना दे जाएगा, आपने जो बुक्स ऑर्डर की हैं वो कर लेगा. Amazon is using now this technology, eBay is using this technology. अब इसका नेगेटिव क्या आया? नेगेटिविटी इस टेक्नोलॉजी की वो ये है कि जी फॉर सम पीपल इट वाज वेरी हेल्पफुल कि जी आपके डोर स्टेप पे और आपको जल्दी मिल जाता है. यू डोंट हैव टू वेट फॉर द कार और यू डोंट हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम और यू डोंट हैव टू वेट फॉर एनी अदर रिसोर्स कि जी कब तक आपका डिलीवरी हो. नाउ द पॉइंट इज कि इसके ऊपर लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, क्रिटिसाइज करने लग पड़े when they using this drone technology for the transport of goods because they said कि once it is going up around तो हमें क्या होता है, हमारे privacy issues आ रहे हैं.
You don't know what the drone is carrying, how, because it has the camera all the time. It is actually making video. You might be in your lounge, you might be sitting totally informal. So people say कि जी हमें privacy issues हो रहे हैं with the usage of your drone technology. So technology को जहाँ पे हम positive ले रहे हैं वहाँ पे उसके negative भी spillovers होते हैं. And yes, privacy is an important issue. Then comes your after environmental richness, फिर हम बात करते हैं environmental interdependence. Environmental interdependence क्या होता है? It is basically the linkage between environmental independence and organization design may be subtle and indirect. ठीक है? Basically क्या है आपकी environmental independence और organizational design का जो आपस में link up होता है, that is basically your environmental and your environment independence. अब organization may co-opt powerful outsiders by influencing them or governing. But अब हम इन लोगों को किस तरीके से लेके आते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में? आप बड़े बड़े पावरफुल लोगों को अपने बोर्ड के ऊपर ले आते हैं, ठीक है? बॉर्ड होता है जिसमें बोर्ड ऑफ गवर्नेंस होता है आपका. देन डेवलप सेंट्रलाइज्ड स्टाफ टीम्स टू सर्विस एन इम्पॉर्टेंट क्लाइंट ग्रुप. यहाँ हमने स्पेशलाइज्ड टीम बनाई होती हैं जो कि एक आपके बड़े इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स होते हैं उनको डील करते हैं. फॉर एग्जांपल मोबाइलिंग ने क्या किया हुआ है, इन ऑर्डर टू हैव मोर लॉयल्टी उन्होंने एक मैनेजर तो नहीं आपका, एक आपको उन्होंने अपना बंदा असाइन किया हुआ. कोई भी मोबाइल लिंक के अंदर प्रॉब्लम होती है, यू जस्ट कॉल देम एंड दैट पर्सन इज गोइंग टू सॉर्ट द प्रॉब्लम आउट. नाउ दैट इज बेसिकली हाउ यू आर ब्रिंगिंग, how you have these centralized teams to actually do this client group. Then comes uncertainty. Ladies and gentlemen, remember कि आपकी uncertainty हमेशा रहेगी. If you think कि आपने achieve कर लिया certainty, that is your biggest mistake. You can't say कि I have eliminated all the uncertainty, because we can't. There is always room for error. There is always a chance that you may have made some mistake or something is going to happen. That is always there. That is your uncertainty. What we can do is we can actually minimize the uncertainty, but we cannot eliminate it. So environmental uncertainty में हम क्या करते हैं? A more organic structure is appropriate. Organizational design responds to uncertainty and volatility. अब वो क्या करता है कि organic structure. Organic structure क्या होता है? That is basically the structure जो कि खुद ब खुद ही grow कर रहा होता है, आपने उसको खुद intervention उस पर की होती है. So organic structure is the appropriate organizational design response. कि जब भी आपकी uncertainty ज़्यादा हो जाए, तो then what you use these organic organizational structure in response to volatility or in response to these uncertainties. Then comes how does environment influence the organization design? इसके अंदर ये है कि जी आपका in a complex global economy firms must learn to co-evolve by adjusting to the environment, क्योंकि environment change होती रहेगी और आपने environment को change नहीं करना, environment आपको change कर देती है. So our best catch is that let's adapt to it. अगर आप उसको adapt करते हैं तो that means that हम उन changes को accept कर रहे हैं, ठीक है? अब there are दो हैं important चीज़ें जिस तरीके से हम उसको co-evolve कर सकते हैं. Number one, मैनेजमेंट ऑफ नेटवर्क्स, कि जो हमने सप्लाई चेन ऑफ नेटवर्क्स रखी हुई है या जो हमने नेटवर्क्स बनाए हुए हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन, हम उनको क्या करें, उनको प्रॉपरली मैनेज करें. उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, एक और आजकल कॉन्सेप्ट आया है डेवलपमेंट ऑफ अलायंसेस. आप स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बना लेते हैं कि जी आई थिंक कि जी मेरे पास सारी वो चीज़ें नहीं हैं या मेरे पास वो स्किल सेट नहीं है, बट यू हैव दैट स्किल सेट. तो आप क्या करते हो, आप उसको दोनों में क्या कर लोगे, स्ट्रेटेजिक अलायंस बना लेते हैं. अब हम ये अलायंसेस क्यों बनाते हैं, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स? इंटरफर्म अलायंसेस हम इनको कहते हैं. कोऑपरेटिव एग्रीमेंट्स और जॉइंट वेंचर्स बिटवीन टू इंडिपेंडेंट फर्म्स. उन दोनों के दौरान हमने मसलन टाइम वार्नर कंपनी और CNN, दैट वाज वन वेंचर. उसके बाद फैसल बैंक का हुआ किसी के साथ, स्टैंडर्ड चार्टर्ड. उसके बाद देयर वाज बैंक कॉल्ड यूनियन बैंक वाज वंस अपॉन अ टाइम. फिर वॉल्स ने पोलका को जब ओवरटेक कर लिया. So these are the cooperative agreements or joint ventures between two independent firms.
उसके बाद ऑफन फर्म्स आर जियोग्राफिकली एंड जियोपोलिटिकली सेपरेट। यूजली ये जो स्ट्रेटेजिक अलायंस बनती है इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि आपकी जो फर्म्स होती हैं वो उस रीजन में नहीं होती, दे आर वर्किंग इन सम अदर रीजन, बट दे आर सेपरेट बट दे हैव वेरी कॉमन इंटरेस्ट्स। अब जब आपके इंटरेस्ट कॉमन हो जाते हैं सो देन दैट फोर्सेस यू, दैट इज अ मोटिवेशन, दैट इज एन इंसेंटिव टू हैव डेवलप अ स्ट्रेटेजिक अलायंस। उसके बाद स्ट्रक्चर दैट इज ऑफन यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज। आप किसको यूज करते हो? यू आर यूजिंग द सेम स्ट्रक्चर। आई डोंट रिमेंबर दैट मिमिक्री वाला जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था, अ स्ट्रक्चर दैट इज ऑफन यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज, क्योंकि अगर वो ऑलरेडी अप्लाइड है देन इट्स बेटर टू यूज द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। सो ये जो आपकी फर्म्स का जो बिहेवियर है जब आपके अलायंसेस बन जाते हैं, अब यहाँ पे आपका वही वाली बात आ जाती है, व्हिच आई एम रिपीटिंग, यहाँ पे आपकी आ जाती है अलायंस उसी वक्त होगा व्हेन माय इंटरेस्ट आर सर्व्ड विद योर इंटरेस्ट, और वो इंटरेस्ट इस तरीके से सर्व हो गए, इफ आई एम आल्सो विनिंग एंड यू आर आल्सो विनिंग, एंड दैट इज द एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ट्रस्ट है, if no matter wherever they are, whichever geographic boundary they are, तो तब तो आपका strategic alliance अच्छा बनेगा. If there is a trust issues, if the companies are having the issues in terms of developing the mutual trust, then it's better to work alone rather than developing any strategic alliance, because the more the complex situation is going to be, आपकी costs क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, आपकी time क्या होता जाएगा, वो waste होता जाएगा, and what you have to do is that you have to create a matrix by the end of the day for every organization. आपके people हैं, आपके resources हैं, आपकी technology है, और आपने इस तरीके से इन सारों को join in करना है, इन सारों को mesh in करना है, that everyone is fully and optimally used, everyone knows what they are doing, and they are using technology as a support to improve their business operation. So people, your technology, your operations, they all make together the good standing for the business in terms of future progress. तब आप कहते हैं कि जी मैं अपनी अनसर्टेनिटी को मैंने कम कर दिया, तब आप कहते हैं कि जी मैंने अपने लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग इंक्रीज कर दी है, तब आप कहते हैं व्हेन यू से कि जी आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो क्या है, सस्टेनेबल है. ऑन द लास्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू से कि जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, नेवर थिंक कि जी दे आर गोइंग टू रिमेन द सेम, वो चेंज होते रहते हैं साइज में, और आप लीडरशिप जैसे जैसे आपकी बदलेगी वैसे वैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिसेस भी क्या हो रही हैं, चेंज हो रही थी. व्हाट वी हैव टू सी that how these changes come, ठीक है, what is the role of technology, और technology इन changes को किस तरीके से adaptive बना सकती है in the organization. Once your staff, once your employees are comfortable in using the technology, then automatically this new process works. ठीक है, I will end up the lecture over here. You people take care of yourself, and next time we will be talking more about technology. Till then, have a wonderful day. Allah Hafiz.